And then finally, this blank. What will come in this blank? The first term is ARY, second term is ARY, third term is RCH, fourth term is RIL. What will be the last? What will be the last term in the series? Hello, people. Am I audible? Saurabh Kadam, Yes, you sir. have. Yes, sir. You are audible. अरे वो सौरभ कदम is not joined via audio. Anyone. If this is the series given, ARY, RCH, RIL blank, what would be the next term in this series? The next term in this series is MAY. These are all last three letters of months. January, February, March, April, and May. Another series I give you. That's 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11. What will be the next term in this series? I'm checking my internet connection. I am on 300 Mbps. तो वीडियो लैग हो रहा है किसी और के लिए तो बताना. Okay. So people, this series 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11. What will be the next term in this series? Please don't send direct messages. Send messages to public chat only. I have received an answer 14. I have received an answer 14. Any other guesses? Any other guesses? 13. Okay. I'll give you a hint. The next answer, the answer to this question is a 3-digit number. The answer to this question is a 3-digit number. The next term in the series is 100. And why that is don't look at the numbers that have been written, look at the numbers that have been removed. Can you perhaps see why the numbers that have the letter T in them, they have been removed? And after 11, the next number that does not have a T is 100. And on the face of it, these questions look like very nonsensical. No, why are these questions so? As in, these are not questions that people will be able to catch on very quickly. These are not questions that somebody who is not aware beforehand would be able to solve in an exam hall. But understand why you also need to know such things is there used to be an exam. FMS used to conduct its own exam back in the day. Up until 2009, FMS conducted its own entrance exam. It did not take CAT as the qualifying score. And SNAP in recent years has started using questions from the FMS entrance papers of that day. And these were questions present in the paper at that time.
There is also this other wonderful question, but because we're already overshooting the time, not today, maybe in some other class. These are questions that you would not face in NMAT or CAT or ZAT. These are not questions you would face there, but in the SNAP section, in the SNAP paper, in the analytical reasoning section, such nonsense does appear. So it is fun if you know. Okay, let's start today's one. Today, the topic that we are going to talk of is creating a repository for interesting and insightful questions. Now, for a lot of us, this term repository would also be unfamiliar. We don't really know what repositories are. We don't really know what is the use of them, how to go about making them, and how, if at all, we do have some collection of good questions created somewhere, how do we utilize them to improve ourselves? So all of that is the agenda today. Of course, the way the session flows is I will give you whatever insights and thoughts and everything that I have to share with you. Once that is done, I will open it up to questions. Whatever questions you have, I'll try to answer them to the best of my ability. Starting off, I am an old person. I have been teaching for a very long time. And I'm a mentor at Anastasia Academy, and I'm a commerce graduate. I'm not a science person. That is all that you need to know about me. Beyond that, I'm fairly standard. Agenda-wise, what is a repository? Building a repository. There are two examples here, a QA repository and an LRDI repository, and revisiting and maintenance of repository. So first, what exactly is a repository? That is what we are addressing. A repository of questions is a centralized database or collection where questions are stored, organized, and managed for easy retrieval and use. Now, in your CAT journey, there are two phases of preparation. First is when you undergo the theory learning, wherein you learn about what is an AP, what is a GP, why middle term is very important in an AP, what are quadratic arithmetic progressions, what are cubic arithmetic progressions, what sorts of different series and functions exist. Algebra examples come to my mind right now because algebra is what we are covering in classes right now. Or let's say if I go one step back in geometry, things like what is a cyclic quadrilateral and what is a trapezium, what is a frustum, the area, volume, all those expressions. When you're covering theory, this is what you're getting acquainted with. Of course, you're practicing, you're coming across questions also. But then most of us who would have started taking mocks or sectionals by now, started some degree of testing, you would have realized the way we approached questions or the way we understood stuff when we were practicing or learning them versus the kind of skills needed when we are attempting mocks or the kind of let's say fluidity in thought needed in order to move from one idea to another idea to another idea to another idea while taking a mock is very, very different. Additionally, in mocks, you have a lot of very minutia related detail present, which ends up tripping people up. Say, for instance, there is this wonderful question around 2 raised to the power a plus 2 raised to the power b plus 3 minus 64 has to be equal to 0. So, what are the number of positive integral solutions that A and B can take? Now, if you try to solve this, we have no way of solving index-based equations apart from using logarithms. And we don't solve equations using logarithms because we are not given log tables. But the interesting or the important thing here is, I can write this as 2 raised to the power A plus 2 raised to the power B plus 3 minus 64. This will only work. Oh, sorry, minus 64. Directly I write it as this is equal to 2 raised to the power 6. 64 is 2 raised to the power 6. I have 2 raised to the power some things here. I have 2 raised to the power 6 here. This can only work if these two terms are identical. If I add a power of 2 with another power of 2 and I end up getting a power of 2, this is only possible if these two terms that are on the LHS are identical. They are equal. 2 raised to the power A is equal to 2 raised to the power B plus 3.
In no other case will I end up with a power of 2 on the right hand side. Now, this will not get covered in any theory class. This will not get covered in any topic identification. But this will be something that you potentially come across in a mock. This will also be potentially covered in a sheet. Some of us who have more expanded sheets and updated sheets, because this idea that I'm talking of is based on of a question that I had come across in last year's CAT. So, while this is a brilliant observation, there wouldn't be a topics around it. Now, let's say you come across this question in a mock and you're unable to solve it. You don't know how to solve it, you move on, at that time you leave. Later on, when you look at the solution and then you realize, oh, this is an interesting insight, this is wonderful, this is amazing, and therefore I should maintain some sort of record. What you should do at that time, is copy the question entire. Either you take a screenshot, or if you have the ability to copy the text with the formatting. I personally prefer taking a screenshot, because when you copy text, formatting may get wrong. Very often in the text you have x square, but when you copy it, it becomes x2. Or if you have x1, x2 terms mentioned like this, when you copy it becomes x1, x2. So it becomes very, very difficult to keep the right formatting. So I personally prefer taking a screenshot. But if you like text only, even that is fine. Take a screenshot of the question you got wrong, or you learned something from, something new that you were previously unaware of, and make a Google Doc. Why I'm saying make a Google Doc is, see, if you keep it in your notebook, if you keep it in a physical register, the access will get limited at a later point of time. You going back and reading it will not be possible. Additionally, those of us who are potentially working, we are working in some place, we are working in some office. At that time, during the course of the day, when you're scrolling through your phone, whether you're scrolling on the Instagram or whether you're scrolling through a Google Doc, nobody is going to peep into your phone. Maybe you can do some sort of working there. Put it down in a Google Doc. First, only the question. Then, whatever learning you've got from the question in your own words. It could be in Hindi, it could be in English, it could be in whatever language it makes most sense to you. But it should be something that you are able to comprehend. Okay, this is the precise learning. For instance, for the previous question, somebody takes a screenshot and says, 2 raised to the power A plus 2 raised to the power B, for it to be equal to 2 raised to the power C, only possible when 2 raised to the power A is equal to 2 raised to the power B. You write down the learning in your own words. Don't copy the solution so much as write down the working in your own words. Now, once you've done this, you solve this, whatever. In the next page, not directly under it, in the next page, also paste the solution. Put down the solution as well. Because we keep doing this over and over again. Now, we keep doing this over and over again, and we would have a collection of good questions that we have come across in mocks and sectionals, questions that we trip up in, or questions that we learn something new from. This would especially be useful when it comes to DILR. Because in DILR, hopefully you realize the primary skill that you need in DILR is, of course, emotion management. You shouldn't get too flustered by the questions that come in front of you. The second skill you need in DILR is different recording styles. The more the diverse recording styles that you're aware of, the better it is for you to be able to capture data and then write it down. Let's say, if you've done your games and tournaments, you can write down the matches A versus B and A versus C and A versus D. You can write down matches happening this way, or you can make a table where you have A, B, C, D mentioned separately. When you're doing games and tournament, I'm hoping both these recording styles you are aware of, that enabled you. Some questions would have this recording style as more suitable. Some questions would have this recording style as more suitable. Different recording styles, new type of information capture mechanisms. The more you capture them, the more you keep them assimilated at one place, the greater your chances of learning. Because during the course of the season, you will take, let's say, 25, 30 mocks. Now, when you're revising, if you go back to every question, not every question gave you something to learn. So going back to every question at a later point of time, let's say you've taken a mock today, 2 months later,
you feel like I should go back and revise from all the mocks that I've taken. At that time, opening every mock and then going through every question, it is a kill on time, and it is also very unproductive because there are going to be lots of questions that you will simply skip over. Or because we are in a hurry to push through so many things, the good question that did trip you up, because it was small or you could not recognize it will trip you up, you skipped over that question. Maintaining a record, maintaining a repository ensures all the questions in that moment, right after the test is done, when you're analyzing the questions that did stump you, you have that collection ready. You also have whatever learning you got from it. And then the task is, you have this beautiful long list of questions. By the time you appear for that, ideally your repository should have upwards of 500 QA questions and at least 350, 350 to the but around 200 DILR sets, because these are the sets that you found something new in. It cannot be absolute basic DILR sets. It cannot be absolute basic quant questions. Percentage change. If the expenditure goes, if the price of a commodity goes up by 10%, by how much should the expenditure, by how much should the quantity consumed reduce so that expenditure remains the same? This is not worthy of a repository. What is worthy of a repository is something that we did not cover in theory coverage, and it was more insightful, which is why I'm not saying educational questions, more insightful questions, something very unique that we potentially missed out on, and later on we were able to capture. Now, I will show you some examples of repository. Right? And this is of a former student of mine. So, not my personal thing, former student of mine. I'll show you, and perhaps you can understand what I mean by a repository and what sort of record taking mechanism needs to be utilized. Look at this. First, we'll look at the QA repository. Now, what he's done is, can you see the repository, people? Please confirm. QA repo, this file. Yes, sir. Okay. So, see, he's put down the question one, whatever question is written down, photo is clicked of that. Add ratio and check if it is prime, blah, blah, blah. Now, even for checking prime, let's say for usual questions, one very good way of checking prime is look at the next perfect square. If the difference between this number and the next perfect square is also a perfect square, then this number is not a prime number. An example of this being, let's say, if you had to check if 493 is a prime number. Is 493 a prime number, people? Is 493 a prime number? It is difficult to see, no? As in, quickly it wouldn't pop in your head. Yes, quickly, it is difficult to see whether 493 is a prime number. But see, after 493, what is the next perfect square? After 493, what is the next perfect square? It is, of course, 529, which is 23 square. The next perfect square is 529. From 529, 493 is 36 back. So 23 minus 6 into 23 plus 6. 493 is 17 into 29. 493 is 17 into 29. Our usual way of finding factors would be going through the list, finding out the square root of this. That would be around 22-ish. So under 22, we check all prime numbers. Under 22, we'd have to check 19. We'd have to check 17. At 17, we'd be able to arrive at our number. But then if it is not at 17, let's say it is at 11, we'd have to check 17, then 13, then 11. The process gets longer. Usually, the numbers that are present in questions, the numbers that we are working with options for, if you have to check whether a number is prime or not, look at the next perfect square and then see the difference. If the difference is also a perfect square, then this number is not prime, which is what he has captured here. Blah, blah, blah. Here, whatever the question was, whatever learning you got, he wrote that down. And then the solution of that question, he has captured that. Then another question, x cube equal to minus x रख देंगे like quad में करते remainder के लिए. X raised to the power 10 is equal to something, 4 terms cancel out. He's also taken a screenshot of, because this was some test that we were discussing in class, इसमें
हमने जो क्लास के अंदर बनाया था ये भी उसने डाल दिया उसके अंदर. Then there is a question, trigger. The trigger should have been keeping values to get L minus M plus N, which works at -1. Here won't work as equal to 0 equation, so only roots work. The second trigger could be the sum of roots, product, etc. Answer is 1. Basically, it is not just the question, it is also the learning you get from the question. That learning is most critical because simply having a question, there are plethora of questions available. These are the questions that you have engaged with. These are the questions that you've tried. And these are the questions in which you tripped up or there was some error that you made. So, if something similar of that nature comes up in the future, you are insulated against making the same kind of error. Then, lots of questions. And it is not just limited to my things. He was taking SimCat and he was taking all sorts of fun questions from different places. These are time questions. Most likely the font and representation would be familiar and visible to you. These are crack. This is a crack you question, of course. This is SimCat again. SimCat 5, SimCat 7, SimCat 11, SimCat 12. Want something. Similarly, the DILR repository, you make a question. Whenever there is a 5-setter Venn diagram involved, always there is a catch. Look for information such as 0.1, which tells us M is inside only E. If you've solved any number of DILR sets, 4-setter Venn diagrams is the absolute upper limit up to which we know how to draw the diagram. For 5-setter Venn diagrams, usually it would be something is contained within something. One set becomes an entire subset of something, and then the solving happens. So you don't really need to make a huge new diagram for it. Then for this question, keeping in mind the above mentioned instructions, blah, 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 blah. See, every question is followed by his own comment. Every question is followed by his own comment. Because if you end up simply taking the question, it is not of as much use versus you having a precise understanding of what error I made and what learning was unique to me for solving in this. In this set, proper understanding of data is of utmost importance. Not that tough, no faltu hit and trial, pure logic hai. If stuck, go to search solution, DILR test 6 solution, data may time 110. Also, when you're copying these questions, okay, I have forgotten to mention this. Whenever you're copying this question, at a later point of time, you may realize there is something off here. I'm unable to solve. I'm unable to get to the right point. Then also record where are you taking this question from? Where are you taking this question from? Which he has done beautifully here. So in the other ones where it was, see, DILR test 6 discussion or SimCat 8 2020. So we know that location where these questions are present. So going back to that spot and then solving, he has his own table created. Go back to the question and do it again. IMS वालों का बेकार है, but he has his own insight. But ठीक है, जो भी उन्होंने किया, then DILR practice set solution, blah 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 blah. Now see, by the end of the year, he has only 33 sets. Solve mock 8, A, all DILR sets, very good, new recording style, nothing of that sort. He has also done some 2 IAM mock. Lots of things he has done. In QA, he perhaps has more questions, some 148 questions. But remember the number that I told you, was around 500 QA questions and around 200 DILR sets. But his numbers are significantly lower than that. How are they lower? Will become clearer in the next slide of what we are covering. See, once you create this document, you have to revisit this document every 15 days. Every 2 weeks, take 1 day or at least 4 to 5 hours. You go through all the questions again. If the question still offers learning, if the question is question के अंदर जो भी है, if it still trips you up, perhaps जैसे today we've talked of this, n raised to the power a plus n raised to the power b is equal to n raised to the power c or n
not equal to 1, sorry, not equal to 1 से ज़्यादा अच्छा रहेगा, or n greater than 1 will be only true when n raised to the power a is equal to n raised to the power b. ऐसा, या ये तो 2 का था, अगर 3 का कर रहे होंगे तो n raised to the power a, sorry, 3 raised to the power a plus 3 raised to the power b plus 3 raised to the power c is equal to 3 raised to the power k. तब ये तीनों को बराबर होना पड़ेगा, जो भी कहानी थी इसके अंदर समझो. इफ when you're solving that question again, not just that question, the concept involved in that question, if it still trips you up, if you're unable to solve that question with your current understanding, then that question deserves to still remain in the document. If you've reached a point where this question is no longer tripping you up, if this question is no longer stumping you, you're able to solve this question without additional input, the thought process required for this is coming from you alone. You don't have to look at the clue. You don't have to look at the solution. The answer comes to you. Not that answer B hai, not that answer A hai. Getting to the right option is not critical. The idea, if it comes to you naturally, then that question has nothing more to offer you. The question has nothing more to offer you at that point of time. You move on. If the question doesn't stump you thrice, this is like the scientific temper wala idea. Until you've done something thrice, you can't believe it to be true. If that question doesn't stump you thrice, then you can remove it from the document. Your document does not have to turn into, देखो हमने इतने सारे सवाल जमा कर लिए. This is a document that only you will go through. This is a document that should only be relevant to you. So over the course of the year, you will have some 500 odd questions इकट्ठा किए हुए. But with passage of time, a lot of those questions will also get eliminated from the running because they will no longer offer the value that they once did. And you keep on repeating this for best outcomes. See, the idea behind this repository maintenance and taking care of stuff is, in CAT, let's say you are an excellent candidate. These are all the kinds of errors that everyone in this world makes. You are so smart that you have learned to avoid these many kinds of errors because of your learning, because of your training, because of your mock taking, because of your different activities you've engaged in. You don't make these kinds of errors anymore. Now the target is, of course, let me expand this range as much as I can. Once you made an error somewhere, once you missed out on something very, very useful, if you don't make that error, essentially what you're doing is, the same range of you making errors, you have expanded it to this far. Now, any reduction in the usual errors that you make, any reduction in the error range that you have, that is the best outcome for you. By the, hopefully, in an ideal world, we would get to this point where we no longer make any errors at all. But it is highly unrealistic to expect we will get to that point. It is highly unrealistic to expect that yahan tak we will reach. It will only happen if you have like a 10-year, 15-year plan for taking CAT. When you're appearing for CAT, your target is to get to your best possible outcome. And your best possible outcome should most definitely include the possibility of you not making similar repeat errors. If you make similar repeat errors, then what you're subjecting yourself to is something known as ज्ञान पापी. मेरे को पता है कि ये मेरी गलती है, but I will take no corrective mechanism, I will take no corrective steps, I will take no corrective action in order to improve it. And that is more fatalistic than not even studying, because जिसने नहीं पढ़ा है उसको पता है उसका कट रहा है. जिसने पढ़ लिया है उसके बाद उसने ये उससे लर्निंग नहीं लिया, from mistakes that you committed, you've not taken learning from it. You will walk into the exam hall with a lot of expectation, and then you will make the similar kind of errors because you've not learned from your errors, and you'll end up disappointing yourself in more cases than less. And that is all that I had to say on the issue. Any questions that you have, whether related to repository making or any other issue, now is the time to ask. We can have a discussion. Hello, sir. Yes. Am I audible? Yes. अच्छा इधर एक थोड़ा डेकोरम मेंटेन करने के लिए don't unmute yourself out of turn, hand raise करना, I will call you out और फिर तुम बात करना. Priyansh, you can start, but for every subsequent person, if you have a question, raise your hand and then we'll talk. Yes, Priyansh. Hello, sir. Sir, this will be my third attempt at CAT.
इनिशियली पहले दो स्टेजेस में मेरा पहली बार 17 आया, देन इट वाज 99 प्लस। बट द इशू दैट आई एम फेसिंग इज कि लास्ट ईयर भी मेरा क्वांट्स में 88.8% ही आया था। एंड राइट नाउ क्या है कि मैं पांच छह क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ क्वांट्स के, बट द क्वेश्चंस दैट आई एम अनेबल टू सॉल्व, अब मैं कहीं से कोचिंग नहीं ले रहा, क्वेश्चन ले रहा, तो एक मतलब एक मान लो एवरेजेस के अगर क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से मैं मटेरियल लेके आऊँ प्रैक्टिस करने के लिए। वो मटेरियल का सर कुछ सजेशन अगर आप दे पाते कि हाउ कैन आई, मतलब उस चीज के ऊपर कि Are you ask, सेम। are you asking me where you can get pirated material? मतलब नो इतने सर, तो हमारे पायरेटेड नहीं, मतलब अबे देख देख सिर्फ। the only place where you will get a collection of averages के ही repeated सवाल, the only place where you can get pirate says ये averages का या किसी भी particular topic का aggregated सवाल is going to be some institute का material, और फिर वो institute का material ऐसे हम see we are very resourceful, there are lots of places where it is available. Additionally, देख, if you have 88ish percentile in your last attempt, yes, that is what you said in quant section, यस सर। तब इससे देख, I have absolutely no other data points, so my analysis could be way off base. Yet, 88 percentile would indicate either our decision making about questions is very off, or we are lacking in basic understanding. ये समझ, जब अपने 22 सवाल देख रहे क्वांट सेक्शन में, अभी तेरा टारगेट है 5-6 सवाल मेरे से हो रहे, 16-17 सवाल मेरे से नहीं हो रहे, 16-17 सवाल अगर नहीं हो रहे, तो फिर एवरेज के एक टॉपिक पे वो हम कर, अभी हमारा थ्योरी कवरेज, लेट्स से इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन फ्रॉम एनी रैंडम टॉपिक, व्हाट इज द लाइक्लीहुड यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट, एंड ऑफ कोर्स इट इज एन एस्टिमेट, इट इज नॉट एन एक्यूरेट नंबर, बट अभी क्या भरोसा है कि भाई हम एक सवाल उठाएंगे तो पक्का कर ही देंगे। एंड ऑफ कोर्स हम तेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, नॉर्मल सवाल, आई एम नॉट गिविंग यू अ क्वेश्चन, दिस इज हाइपोथेटिकल, इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन राइट नाउ, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट? सर 30 to 40%। इफ यू आर 30 टू इस साल। 40%, तो भाई फिर अपनी थ्योरी इन प्लेस है। हाँ जी सर, मतलब थ्योरी इन प्लेस है, बट एज फार एक एज एक एक, एलजेब्रा एक और। हाँ जी, हाँ जी, यही हाँ तो जी। देख, यू कांट स्टार्ट ऑफ हाँ। विद तेरी थ्योरी इन प्लेस है, बट एज फार एज अलजेब्रा, तो पूरा एक टॉपिक को कैसे बोल सकते भाई कि ये इसकी इसके अंदर दिक्कत आ सकती, विच इज टू से देख, राइट नाउ अगर 88 था और अपने को, आई वुड रिकमेंड पहले तो सारा थ्योरी कवरेज करो, उसके बाद थ्योरी कवरेज, आई एम नॉट सेइंग स्टॉप टेकिंग वॉक्स, लेकिन थ्योरी कवरेज भी साइमल्टेनियसली करो एक टॉपिक पे। अगर एवरेज का मेरा एक सवाल खराब हुआ है, तो हम जाके एवरेज के 20 सवाल करेंगे। Essentially what you're saying is, by testing I'll identify what are my weak areas and then I will practice them. My process, my recommendation to you would be, पहले जा कोई भी एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ मटेरियल उठाना, हर किसी का थोड़ा 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 सवाल कर देना, उसके बाद whatever you learn from that question उसका repository बनाना और आगे बढ़ना, because going back and finding, let's say unless you have simcat के अंदर वो प्यारा सा काम नहीं करते, रिवाइज विथ एआई वाला एक ऑप्शन रहता है जिसके अंदर सिमिलर हाँ जी, क्वेश्चन हाँ जी, रिपीट कर करके आते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड आइडिया, बट अभी हमने सिमकैट 4 का कुछ प्रैक्टिस सॉल्विंग किया था अपने बच्चों के लिए, तो उसमें हमने देखा भाई रिवाइज विथ एआई के अंदर सेम क्वेश्चन ही रिपीट कर करके आ रहा है, जस्ट दैट नंबर्स बदले जा रहे हैं, सो आई डोंट थिंक इवन दैट सर्व्स योर पर्पस। what you would perhaps what would perhaps be more beneficial for you is, you pick up any standard material and go through that material in entirety simultaneously, instead of नहीं मेरा एवरेज का खराब हुआ तो चलो हम एवरेज के सवाल बहुत सारे करते हैं, या मेरा फंक्शन का एक सवाल खराब हुआ तो हम फंक्शन के बहुत सारे करते हैं, बिकॉज इवन विद इन दैट टॉपिक, इवन विद इन लेट्स से एवरेजेस, देयर इज सच वास्ट डिफरेंस इन स्किल। एक सवाल रहता है, एक बैट्समैन ने 10 इनिंग में 22 रन बनाए हुए हैं एवरेज पे, 11वें इनिंग में कितना बनाए कि उसके 24 रन हो जाए एवरेज, एक ये फर्जी सवाल आ रहा होता है। और फिर एक होता है कि भाई एक क्लासरूम में इतने बच्चे, एक क्लासरूम में ए बच्चे, एक क्लासरूम में बी बच्चे, एक क्लासरूम में सी बच्चे, और फिर इन दोनों क्लासरूम का एवरेज ये है, इन दोनों क्लासरूम का एवरेज ये है, इन दोनों क्लासरूम का एवरेज ये है, तो अब अगर एक चौथा क्लासरूम आ रहा है जिसको मिलाने के बाद चारों का एवरेज ये हो जाएगा, तो चौथे का एवरेज का रेंज क्या रहेगा? The difficulty level is significantly different in both these questions. So going back and doing only average based question, the topic familiarity या topic comfort is something you cover in theory stage. जब हम ये मॉक का टेस्टिंग कर रहे हैं, then it has to be insightful. ये एरर किया हमने, इसमें क्या एरर किया है, क्योंकि
अगर हमने ये एरर किया है, इवन इफ आई गो बैक एंड डू 50 एवरेज क्वेश्चंस, it's not like I'm overcoming this error, because this error would be very peculiar if my theory is in place. And if my theory is not in place, anyway, this error would happen until I do a lot of practice randomly. अब वो कहाँ से करना है? In terms of which material is better? Is that where the question is going there? क्या वहां जा रहा है अपना सवाल? अच्छा, which material is better? ये सवाल. हाँ सर, मतलब अगर थोड़ा सा सजेशन हो जाए स्पेसिफिकली टू क्वांट्स, मतलब बाकी चीजें तो मैं अरे कॉप अप एकदम कर पा रहा हूँ, स्पेसिफिकली टू क्वांट बता रहे भाई. कोई भी मटेरियल उठा और करना चालू कर दे. डोंट जज मटेरियल. जो सामान सामने आ रहा है, स्टैंडर्ड मटेरियल. इफ यू पिक अप एनी ऑफ द बड़े वाले इंस्टीट्यूट का सामान, और इफ यू पिक अप एनी स्टैंडर्ड बुक, उठाओ और करना चालू कर दो. एवरी मटेरियल हैज समथिंग ग्रेट इन इट, एवरी मटेरियल हैज समथिंग बैड इन इट, बट ऑन दी होल एवरी मटेरियल शुड सर्व एज अ क्वेश्चन बैंक. इसमें सवाल उठा रहे, सॉल्व कर रहे, सवाल उठा रहे, सॉल्व कर रहे. ईमानदारी से अगर हमने सवाल उठा के सॉल्व कर दिए, मेरी लर्निंग हो गई. देर इफ यू स्टार्ट निट पिकिंग एंड फाइंडिंग होल्स विथ इट, तो फिर टाइम के सवालों में, लेट्स से टाइम के मॉक टेस्ट सीरीज के सवालों में, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें ना कुछ मतलब they use terms that have never been tested in CAT. They always have this wonderful question on perfect numbers. Every year they have a question on perfect numbers. They always have a question based around continuous compounding. जो एसएससी में पूछा जाता है, कैट में पूछा नहीं जाता है. बट वो करते हैं क्योंकि उनको कूल लगता है, तो वो करते हैं. बट फिर बाकी सामान उनका ठीक ही है. When you go to IMS, they have their own challenges. When you come to CL, they have their own challenges. CL के तो I don't know how many of us remember. Last year, there were at least 3 different instances in which I remember test के दौरान the quant के question they displayed was something, because it was an error based question. After the test they changed the question itself और फिर उसका वीडियो सोल्यूशन बना के दे दिया. लोगों के आंसर गलत कर दिए, कुछ भी मजाक चल रहा था. तो every material will have some lacuna. Every material will be, let's say, inadequate in some manner. Instead of judging which material is nice, मस्त कोई भी एक मटेरियल उठाओ और करना चालू कर दो. वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि as long as you keep doubting इस मटेरियल में ये खराब है क्या, इस मटेरियल में ये खराब है क्या, eventually you would get to a point where we are not really doing any material at all, which is a worse outcome than doing something in totality. उठाना और कर देना, ज्यादा सोचना मत. सब मटेरियल अच्छे, सब चीज अच्छी है. ठीक है सर, थैंक यू, अंडरस्टूड. ओके, यस निशा. हाय सर. सर मुझे क्वांट में इतनी खासी डिफिकल्टी तो नहीं है, मतलब इन मॉक्स अभी 98 के अराउंड होवर करता है, बट कुछ टॉपिक्स है जैसे कि आपने बोला कि डॉक्स लाइन से क्वेश्चंस का रिपोजिटरी बना लो. तो आई एम आस्किंग कि डायरेक्टली इस तरीके से रिपोजिटरी ज्यादा इफेक्टिव होगा, या फिर मान लीजिए टॉपिक वाइज अगर सेग्रीगेट कर दें, लाइक नंबर सिस्टम एक जगह, ज्योमेट्री, क्योंकि मेरा ज्योमेट्री जैसे कि अच्छा अच्छा, आई नो वेयर दिस इज गोइंग टू की हैपन. तेरे को अगर अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग बना ले, कोई दिक्कत नहीं. आई देख, जब थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब क्लासरूम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड रहता है तो अच्छा रहता है. उसके बाद टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन करने में एक थोड़ा एफर्ट पड़ेगा. अभी समझना, अभी जो हमने ये काम बताया ना कि भाई फोटो खींच लेना और उसके बाद का काम लिखना, once you start applying it, you'll realize भाई बड़ी मेहनत है, क्योंकि हर मॉक के बाद एक गूगल डॉक खोलो और लिखो और ऐसा काम करो, उसमें भी दिक्कत आएगी. द वे यू डू इट इज, जब भी हम मॉक का एनालिसिस करें, हम फोन से फोटो खींच रहे, एक बढ़िया व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें आई विल बी दी ओनली मेंबर, उसमें हम सामान भेजेंगे, और उसके बाद हम डिपेंडिंग ऑन वेयर दिस, एक बार हफ्ते में एक दिन बैठ के हम सब रेपोजिटरी के अंदर ट्रांसफर करते हैं. इफ आई मेक अ रेपोजिटरी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अब हम सिर्फ नंबर के सवाल देख रहे हैं, then what that biases us is, ये समझ, when you're only doing time and work, the traps that are present in time and work are very fresh in our brain. उस टाइम पे मेरे को पता है, हाँ यहाँ पे नेगेटिव वर्कर आ रहा है लास्ट डे पे, तो फिर मेरे को नंबर ऑफ डेज का ख्याल रखना पड़ेगा, कैसे जा रहा है. अगर लीक आ गया, लीक का एफिशिएंसी कम हो गया, इनका एलसीएम से काम बढ़ाए या वो रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन से काम बढ़ाए, these decisions become very very ingrained because we are doing the same topic over and over again. जब हम मॉक दे रहे होते, तब ना इनके बीच में वो ये बोल रहे थे, मॉक में एक स्किल चाहिए होता है फ्लूइडिटी बिटवीन डिफरेंट आइडिया, थॉट्स एंड सेटअप्स. अपने को मूव करना होता है. जब अपने डिफरेंट आइडियाज, थॉट, सेटअप्स मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे
ये नहीं कर सकते कि अभी सिर्फ टाइम वर्क का करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे. इट वुड, I am okay with you making it across 5 topics: numbers and arithmetic and algebra and geometry and modern maths. Or if you want to go even more granular, numbers में factors का अलग बनाएंगे, HCF LCM का अलग बनाएंगे, base system का अलग बनाएंगे, classification का अलग बनाएंगे, फिर arithmetic में time work का अलग बनाएंगे, TSD का अलग बनाएंगे. You can be as granular as you want, and or you can be, the purpose of this is मेरे को सीखना है कि भाई मेरे अंदर कुछ मुद्दा रह गया. Now if your doubt or your concern is stemming from, there are certain topics within quant. Overall, I'm decent at quant, but there are certain topics within quant that I'm not strong at. Repository does not fix that. Repository is supposed to give you, ये हमने टेस्ट के अंदर देखा, बेसिक मेरा इस टॉपिक का ठीक है, वही अभी जो पिछले वाले कोई बोल रहे थे, अगर एक टॉपिक का बेसिक खराब है, तो पहले जब वो टॉपिक पढ़, उस टॉपिक के खूब सारे सवाल कर. Now when you come here, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इंसाइट मिलनी चाहिए. Nobody is going to crack that क्योंकि उसने 15,000, nobody is going to crack that because उसने 15,000 मॉक दे दिए. मॉक देने से पहले थोड़ा थियोरेटिकल ग्राउंडिंग और बेस बना रहना चाहिए. उसके बाद आप मॉक दे रहे हैं, उससे सीख रहे हैं. अच्छा, टेस्ट टेकिंग, मॉक्स आर सपोज्ड टू बी टेस्ट टेकिंग एंड सम थ्योरी. I know people, I can see your hands raised, I can see it, I will come to you, please wait. So mocks are supposed to be a test for where we are and are there any blind spots in my learning. Mock is not supposed to teach you theory. तो अगर हम let's say algebra में मेरा हाथ तंग है, तो हम algebra के सवाल की repository बना लेते हैं. तो हमने algebra का बेसिक नहीं करा, अब हम algebra के टफ सवाल ही बना रहे हैं. What that would also bias you towards is, whenever you look at an algebra question, you would always think कि कुछ हाई लेवल का बात ही चल रहा होगा, क्योंकि बेसिक algebra हमने करी नहीं है. सस्ता सवाल भी आया तो हम उसके अंदर कुछ टिकड़म खोज रहे होंगे, which is a huge problem for a lot of people solving quant. They are not solving the question, they are always trying to outthink the question setter. Question setter ना मेरे को यहाँ फंसाना चाहता होगा, हम ऐसे बच जाएंगे. जबकि सवाल एकदम सीधा सीधा ले रखा था, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को इस्तेमाल करके काम चल जाएगा. So instead of making a collection of good questions as a collection of questions of algebra from mocks, I would say if algebra is a weak spot, go back, practice a lot of algebra. Then this mock repository building or insight building is not supposed to be कि इसके अंदर ये theory input है जो आपको सीखना है. इसके अंदर कुछ brilliant सा insight है जो theory coverage में नहीं आया, लेकिन यहाँ से मेरे को सीखने को मिला. Which is why वहाँ पे जो insight वो भी था, whether number is prime or not. Theory में तुम यही सीखते ना, for a number, look at its square root और उसके नीचे प्राइम नंबर से डिवाइड करना चालू करो कि इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं. This is the theory part of it. लेकिन more practical aspect of it, the next perfect square और इस नंबर के बीच का डिफरेंस देखते हैं, this is also a perfect square, then this number is not a prime. अब this is more actionable, this is more functional insight versus the earlier being more theoretical input. Theoretical input होना जरूरी है, तभी functional insight पे कम भी हो पाए. Okay? Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Yes, Ayush, go on. Hi, sir. Good evening, sir. I have a two-part question. So, पहला part है कि so I'm decent with QA and BARC, but in LRDI section I'm getting negative, as in I couldn't even able to grasp a single set. मतलब और वैसे सेट जिसमें कि 9-10 स्टेप्स आ जाते हैं ना LRDI के सेट्स में, सर उनको मैं एक साथ एक्यूमुलेट करके सॉल्व ही नहीं कर पाता उन सेट्स. तो हाउ शुड आई मूव अहेड विद द LRDI? अच्छा, तो एक मस्त चीज बता भाई आयुष. योर क्वेश्चन इज, मेरा मतलब वेरी वेरी सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन नहीं है. तुम अपने डायग्नोसिस में ना कॉज नहीं देख रहे, तुम सिर्फ सिम्टम मतलब आउटकम देख रहे हैं अपनी बीमारी का. आउटकम है कि तेरे से सेट नहीं सॉल्व हो रहा. हम ये बता, थ्योरी कवरेज हमने कर ली सारी बेसिक टॉपिक्स की DILR की? तो सर सबकी नहीं की है, वेन डायग्राम और अरेंजमेंट्स और. ठीक है, पहला चीज अभी पार्शियल कवरेज हुआ है थ्योरी का. दूसरा सवाल, हमने प्रैक्टिस बहुत सारी कर ली है सेट्स की. Have we done outside of class sheets and whatever is handed out to you? Have we done like 200 to 250 sets so far? No sir, I am following only your video. like जितना आप DLR में अपलोड करते हो, तो I have been 55 sets I have done. बहुत प्यारी चीज. 55 sets is nowhere enough. और मेरी videos are random videos from
इधर उधर से सवाल उठाए। टॉपिक कवरेज इज नॉट यूनिवर्सल, सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे उसके अंदर। My videos are supposed to serve as practice content after you've done your theory coverage. My videos are not supposed to be a substitute for theory. क्योंकि अभी तेरे को अभी जो DILR रेपोजिटरी के अंदर एक बात थी, 5 सेट का वेन डायग्राम है तो एक पोर्शन उसके अंदर आ जाता है, ये बात सुनी थी कभी? नो सर। तब पहले भाई थ्योरी कवरेज करना पड़ेगा। नाउ ये बता, क्वांट की थ्योरी कवरेज करी थी? टॉपिक वाइज पढ़ा है क्वांट की? क्वांट भी रैंडमली ऐसे ही टेस्ट देना चालू किया? नो सर, क्वांट में मैंने अरिथमेटिक किया है, अलजेब्रा किया है और नंबर सिस्टम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये देख, एक जगह हमने थ्योरी कवरेज, अभी DILR में 2 पार्ट्स टू, एक तो थ्योरी कवरेज खत्म कर, उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, द 55 सेट्स दैट यू डन, द 55 सेट्स दैट यू डन, दैट इज अ गुड स्टार्ट, बट पुश दैट अप टू 150 200, नॉट, एंड इट डज नॉट हैव टू बी माय सेट्स, हैज टू बी एनीवेयर, कहीं से भी कर, लेकिन कर बहुत सारा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। ये DILR इज द न्यूएस्ट थिंग आउट ऑफ BARC, जिसमें इंग्लिश टेस्ट हो रहा है, एंड क्वांट जिसमें मैथ्स टेस्ट हो रहा है। DILR is the newest section. If you're taking CAT for the first time or the second time, this is the most uncommon thought process that you would have to engage in order to ace CAT. So DILR के लिए we need more practice rather than less practice compared to the other 2 sections. Not that because मेरे को DILR पसंद है, but if अपना हाथ तंग बैठ रहा और अपने से सेट नहीं हो रहा, as of now, my also question to you would be, भाई हमने अभी तक अरिथमेटिक करा है और अभी तक हमने अलजेब्रा करा है, ये 2 टॉपिक करे, और अभी हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, और अभी हमारा वेन डायग्राम में क्या क्या बचा है, सॉरी वो DILR में क्या क्या बचा है? सर DILR में मैंने अभी परसेंटेजेस, एवरेजेस के क्वेश्चंस किए हैं, और LR के लिए मैंने अरेंजमेंट्स और वेन डायग्राम स्टार्ट किया है। तो एक बात बता भाई, तेरा तो मेजर पोर्शन ऑफ DILR बचा ही हुआ है, तेरा तो मतलब क्वांट के अंदर यू डन रफली 55 to 60% of the portion that you should cover. In DILR you barely done 20% of what you need to cover. अभी तेरा गेम्स एंड टूर्नामेंट बचा हुआ है, अभी तेरा वेन डायग्राम बचा हुआ है, अभी तेरा बाइनरी लॉजिक बचा हुआ है, और ये परसेंटेजेस और एवरेजेस जो हमने किया है, परसेंटेजेस एंड एवरेजेस जो हमने किया है, परसेंटेजेस एंड एवरेजेस आर नॉट इवन अ टॉपिक, क्योंकि the topics are supposed to be data representation styles, tables and lines and bar charts and pie charts. ये table averages सर are मैंने वो supposed to be a करा है, calculation जैसे मैंने technique. ग्राफ्स और टेबल मैंने किया है DI के लिए। ठीक है, तब फन चीज ये भी तेरे को दुख हो रहा होगा, तो जब हम लोग DI पढ़ना चालू करते हैं तो टेबल, ग्राफ, लाइन, ये सब बहुत सारी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाद में जब मॉक देने आते हैं एक भी सवाल ही नहीं आ रही है टेबल, लाइन, ग्राफ का, है ना? यस सर, क्योंकि वो चीज आता ही नहीं है वैसे। अरे in recent years CAT has drifted away from DI in entirety. In fact, last year in my slot I remember all 4 sets are LR, एक भी DI का सेट नहीं था, तो फिर जो जो हालत थी वो हालत थी। LR के अंदर ज्यादा स्ट्रांग होना है, LR के अंदर अभी हमारा कवरेज कम हुआ है, सो बी अ लिटिल काइंडर टू योरसेल्फ, यू आर नॉट डूइंग पुअरली, इट इज जस्ट दैट यू आर नॉट येट प्रिपेयर्ड। उसके अलावा वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आउटसाइड ऑफ क्लास शीट्स in order to get to the point where you can be confident कि हम अच्छे से करें। हमने टेस्टिंग इतनी जल्दी चालू क्यों कर दी है फिर? Why are we taking tests so early जब हमारा कवरेज सिग्निफिकेंटली बाकी है? So because in the coaching everyone was saying कि mocks लगाना start कर दो irrespective of the syllabus you have completed, so the testing I started. ठीक है, देख लेना, I do not ascribe to that theory. My thing is जब तक गेम्स एंड टूर्नामेंट, वेन डायग्राम, these are like the standard। वही है, तेरे को अगर अभी पानी उबालना नहीं आ रहा है लेकिन सबको भूख लगी है तो चलो हम डिनर बना देते हैं, तो भाई हम पॉइजनस खाना बना देंगे, एंड देन बिकॉज वी आर वेरी इमोशनली अनस्टेबल बींग्स, अभी तेरे जब टेस्ट में नंबर खराब आते हैं उस टाइम पे लोग नहीं बोलते ना कि उस टाइम पे लोग सपोर्ट कर रहे नहीं आ रहे, उस टाइम पे ये लगता है भाई मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। यू वुड बी दी ओनली पर्सन फेसिंग दैट ट्रॉमा, येट एडवाइस देने के लिए हर कोई है, तो anyway listening to the average of the crowd is a bad choice. My personal recommendation, of course you will do whatever you feel is most appropriate. My recommendation would be, first make sure your basics for every topic is done, and then mocking and sectionaling and all the testing that you engage in. I'm not saying कि एकदम ही जब तक पूरा 100% कंप्लीशन ना हो जाए तब तक मत करना, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट कर लो कि भाई जैसे arithmetic and algebra constitute around 60% of the quant section,
तो क्वांट के अंदर अपना हाथ चल रहा होगा, सवाल भी पहचान में आ रहे होंगे, सॉल्व भी हो रहे होंगे, ठीक ठाक चल रहा होगा। DILR के अंदर Yes, sir. if we have spent majority of our time based on the information majority of our time on data processing, और data processing तो आ नहीं रहा है, तो फिर जिंदगी में तबाही होगी अभी तो। There is no point in you taking a mock right now. Yes, sir. अभी Sir, थोड़ी can you देर recommend some sources to cover the theory portion of LR? Do you know any sources that I can go for the theory part? I have absolutely no clue. मतलब LRDI का there are I know practice sources, मतलब एप्टीट्यूड जैब चैनल अच्छा है, हमारे चैनल पे कुछ सेट्स है, LRDI मास्टर चैनल पे कुछ सेट्स अच्छे हैं, एलिट्स ग्रिड के चैनल पे कुछ सेट्स अच्छे हैं, क्वांटिफायर के चैनल पे कुछ सेट अच्छे हैं. These are all practice sources. I don't think you would have any access to theory coverage somewhere. Sadly, एक फन चीज ये भी बता रहे, because it is the industry I operate in a lot of coaching institutes also theory coverage कुछ नहीं कराते, बस सवाल देते रहते और सवाल से आदमी सीख जाए वाला एक्सपेक्टेशन रखते. तो मेरा तो ये पर्सनली दुख है कि भाई लोग LRDI में बेसिक थ्योरी कवरेज के नाम पे गोलीबाजी खेल रहे हैं. सो आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू व्हाट प्लेस आई कैन रेकमेंड कि भाई यहाँ जाके थ्योरी देख लो, ठीक रहेगा. Okay, sir. यस सौरभ कदम. Yes. So, first of all, thank you, sir, for providing this approach to make use of the new sets that we. भाई रुक एक फॉर्मेलिटी छोड़, मुद्दे पे आ, सीधा सवाल पे आ. So my question is, in this session we have covered the QA and the DILR part, okay, but we haven't covered the VRC. So why is it not advisable to make a repository for the VRC section? Because for VRC section, even if you make a repository, you realize once you know the answer in the language question, it is based on reasoning. Once you know the answer in the language question, what other things can you derive from it? What is the learning that you learn from one VRC section or one VRC question that can be replicated elsewhere? Okay. एक RC पैसेज के अंदर जो काम हुआ वो तो उसी RC पैसेज का काम हुआ, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग. You can potentially start to identify in your analysis part. You would identify similar errors that you make. Let's say you miss out on the last word except, or when you're looking for in parajumbles, you tend to not pay attention to words like this and such, which would indicate something has to come prior to this. But then once you have done a parajumble question, you cannot come back to it and expect नहीं अब इसके ये वाला parajumble question अब हम दूसरी बार करेंगे तो भी मेरे को वो स्किल या वो अंडरस्टैंडिंग की मिसिंग रहेगी. सो फॉर VARC the repository doesn't work as much. For VARC mock analysis would work, reasoning building would work, but repository would not be as useful a tool there. Okay, thank you. Okay. Yes. Hi sir. So sir, मेरे को ये पूछना था कि as you know कि GMAT has shifted its focus. अब GMAT focus. I don't know. I have absolutely no clue. I'm very ill informed about GMAT. अच्छा, okay. So sir, actually उसके बारे में बस ये पूछना था, even if you have heard, if you can give any insight कि CAT is considered tougher than GMAT in general. तो मतलब ऑल्दो दोनों का एक सेक्शन एक दूसरे से ज्यादा टफ होता है, बट जो क्वांट का पार्ट होता है वो ज्यादा टफ हो जाता है, तो वो नेट टफनेस जो होती है वो कैट की ज्यादा हो जाती है. सो डज कैट प्रिपरेशन हेल्प इन जीमैट? मतलब CAT preparation helps in GMAT very much. CAT preparation helps in GMAT very much, but there are distinct spheres in which CAT prep and GMAT prep would overlap. In fact, there is, I remember GMAT of the older version, क्योंकि हमने 2021 में GMAT दिया था पहली और आखिरी बार जिंदगी का. तो उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो काम था, इट वाज वेरी वेरी बेसिक. लेवल 1 क्वेश्चंस एकदम सिंपल काम चल रहा था. यू हैड टू बी attuned to using dollars as a unit, and then there are terms like gallons and feet वगैरह. नहीं, feet ये सब टर्म अगर पता थे तो ठीक है, कोई बुरा नहीं लग रहा था, काम चल रहा था. Then there was another, within the quant section itself, there was something known as data sufficiency. Now, data sufficiency, when it comes to CAT prep, it used to have significant importance back in the day when CAT had DS questions and other exams had DS questions. But DS questions have become significantly reduced now, and therefore their importance or weightage in coverage in class is also reduced significantly. Because of that, most of the traps that people could potentially fall on,
Are you people able to see this page right now? एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैप दिखाते हैं DS का. Is x square, sorry, sum of squares of two numbers adds up to 625. Oh, sorry, adds up to 625. What are the two numbers? The first statement is both are integers. Both the numbers are integers. One of the numbers is a perfect square. I'm assuming when you're asking about GMAT, we are aware of all the 5 options that are present in DS questions. Yes, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका आंसर क्या रहेगा? Sum of squares of two numbers adds up to 625. What are the two numbers? Both are integers and one of the numbers is a perfect square. What would be the answer to this question? A, B, C, D, E. बहुत ही सर अच्छा. अभी एक्चुअली आई हैव नॉट ठीक है. स्टार्टेड माय प्रेप, इसलिए मैं पहले पूछ रहा था अभी. अच्छा ठीक है. ट्रिपलेट में आ जाएगा. थैंक यू. अरे रुक जा निशांत, ऐसे नहीं, आउट ऑफ टर्न नहीं अनम्यूटिंग करते. ये जरूर चीज यहाँ पे ये बोल रहे हैं, हम लोग जब अपना इंटीजर, ये चैट वाले के अंदर भी दिक्कत रहती है, जब भी इंटीजर बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है. As soon as I am able to see 20, 15 or -20, -15, हम बोल देंगे कि भाई दो पॉसिबल आंसर आ रहे, डेटा वन इज इनसफिशिएंट. वन ऑफ द नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर. वन ऑफ द नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अब यार 20-15 नहीं चलेगा. नाइदर ऑफ द नंबर्स आर अ परफेक्ट स्क्वायर. -20, -15, इनफैक्ट इसी के 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी. नन ऑफ देम वुड वर्क. हाउ अबाउट अ 24 और अ 7? दिस वुड आल्सो नॉट वर्क. हाउ अबाउट अ 0 एंड अ 25? 0 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर मिलके भी तो 625 बनाता है. ये भी नहीं चलेगा. ये चलेगा. Would this be an acceptable case or not an acceptable case? If one of the numbers is a perfect square, is 0/25 an acceptable case for the two numbers or not an acceptable case for two numbers? So this can be, I guess. This can be. अभी बहुत दूर है भैया. देख, this is most definitely an acceptable case, and therefore is data 2 sufficient? Data 2 is still insufficient क्योंकि एक और केस बनेगा 0, -25. This is also a perfect square. This is also a perfect square. This is also a perfect square. Here we have two perfect squares. उसने बोला है one of the numbers is a perfect square. एक को होना है, not exactly one. One of them has to be a perfect square. दोनों भी perfect square है तो चल जाएगा. लेकिन यहाँ पे भी एक perfect square है. We are still reaching to two answers. दोनों को साथ में भी अगर बैठा दिया तो भी insufficient रहेगा. But then the ability to remember 0, 25, making out these cases, this is not something that you would get accustomed to when you're doing CAT prep. इसके लिए मेरे को GMAT हार्डकोर TS prep करना पड़ेगा. You would have to go through, let's say, 800 to 1000 questions for TS. उतना सवाल अपने को खेलना पड़ेगा, तब जाके मुद्दा समझ में आएगा. When it comes to RCs, when it comes to the VARC section, जो अंग्रेजी का सेक्शन उनका RC बहुत अच्छा होता है. GMAT का RC is very very logical. GMAT का RC is very reasoning based. मेरे को GMAT का RC CAT के RC ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि CAT के RC में अपनी मर्जी से कुछ भी रैंडम काम चल रहा है. GMAT के RC में it is very reasoning based, it is very logical, तो वो अच्छा है. But then there is also an element of sentence correction. वो ग्रामर चेक करने वाली बात. CAT के प्रेप में ग्रामर, अर्लियर ग्रामर का क्वेश्चन आता. अप अंटिल CAT 2008 ग्रामर के खूब सारे सवाल आते थे, तो क्लास में ग्रामर पे खूब सारा वेटेज रखता था. अब क्लास में जब ग्रामर चल भी रहा होता है तो बच्चे, अरे ग्रामर तो कोई पूछता नहीं, एकदम ही लाइट लेते हैं, तो ग्रामर पे एकदम ही हवाबाजी चल रही होती है. जब GMAT में जाओ, सेंटेंस करेक्शन करना चालू करो, दुनिया पलट जाती है. बिकॉज वहां का ग्रामर, familiarity and identifying the common errors that are being made. So
while CAT prep will aid in GMAT prep. Overall statement is CAT prep will aid in GMAT prep. It's not like CAT prep कर लिया तो GMAT के लिए रेडी हो गए. GMAT के लिए सिग्निफिकेंट और मेहनत करनी पड़ती है. ओके ओके सर, एक्चुअली अभी जो चेंज आया है उसमें उन्होंने सेंटेंस करेक्शन हटा दिया है, एंड जो कॉन्ट्स वाला सेक्शन है उसमें से डीएस हट चुका है. सो क्या बात है, जिंदगी हाँ, में खुश है खुश. हाँ, तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि फिर तो ओवरलैप और ज्यादा शायद इंक्रीज हो गया हो, तो Okay, over. क्या Regardless, even if the overlap is still there, is this your first attempt at CAT? यस सर. फिर अभी I'm एनमेट yet और to स्नैप से begin. कंपैरिजन, हाँ अभी एनमेट स्नैप से कंपैरिजन नहीं दिखा सकते. इवन व्हेन यू प्रिपेयर्ड फॉर कैट, व्हेनेवर यू प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम, दूसरा एग्जाम देने से पहले ऐसा कर अभी, व्हेन आर यू प्लानिंग टू टेक जीमेट? सर मैं अगस्त एंड में देना चाह रहा हूँ, एंड आई हैव टेकन अ गैप, सो आई गेस तो एक मस्त चीज है, कैट तो इस साल नहीं दे रहे हम. कैट इज नॉट आवर प्रायोरिटी दिस ईयर. नो, since sir I'm taking a gap, I can also give CAT, मतलब first attempt GMAT का दे hey, दूँ. I can also contest for the post of MLA in my constituency. I can also do this, but that is of course not a realistic target because if I'm taking GMAT in August, अभी जुलाई मिड से लेके अगस्त तक में भर के अपने जीमैट कर रहे होंगे. There is a very critical time in CAT prep which is happening in November. We are taking CAT for the first time और बीच में हम 1.5 महीने के सिग्निफिकेंट पीरियड में किसी और एग्जाम पे ध्यान दे रहे होंगे. तो कैट इस साल अपनी प्रायोरिटी नहीं है. आई एम नॉट सेइंग इट इज अ बैड थिंग, यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग कैट. आई एम सेइंग बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि कैट मेरा प्रायोरिटी नहीं है, जीमैट मेरा प्रायोरिटी है. क्योंकि बाद में ये ना हो जाए यार कैट में खराब आ गया, क्योंकि हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया है. वी आर नॉट पुटिंग इट एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. तो अगर उसमें खराब आए तो दुखी मत होना, ये बोल रहे बस. ठीक है, तो बाकी जीमैट पे जान लगाओ, बढ़िया करो, बट spend at least 1.5 minutes, spend at least 1.5 months on taking the GMAT paper, going through the different question types, practicing a lot of it. क्योंकि वो GMAT का किसी भी एग्जाम का फ्लेवर उसको उसी को देके पता चलता है, किसी और. कैट से जीमैट की तैयारी नहीं होगी, जीमैट के लिए अलग जीमैट मेहनत लगती है. Which should also, अच्छा, remember your first question was if I am familiar with the changes. I am absolutely not familiar with the changes. जीमैट में हम कोई ध्यान नहीं रखते हुए. ठीक है. Yes, हिमाचल. Thank you so much sir. सर आई वांटेड टू आस्क दैट ये बेसिक्स कवर करने के बाद, मतलब क्वांट्स में बेसिक कवर करने के बाद और मॉक्स के बीच में जो गैप है वो उसको कैसे कवर करते हैं सर? बेसिक्स कवर करने के बाद, अच्छा, व्हेन वी से बेसिक्स कवर करने के बाद व्हाट एग्जैक्टली आर यू रिफरिंग टू एज बेसिक्स? सर क्वांट्स का मतलब जैसे अलजेब्रा में सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लिया, मॉड्यूलस फंक्शंस सारा कर लिया, और ठीक है. सबका 15 लगभग 15 से 30 हर टॉपिक का. 15 से 30 इज वेरी लो, बट ठीक है, चलते रहे. हाँ, पर टॉपिक का मतलब अलजेब्रा में पर टॉपिक का 15 से 30 ऐसे कर लिया क्वेश्चंस. ठीक है, ठीक है. और तो इतना करने के बाद पीवाईक्यूज जब मैंने देखा तो ऑलमोस्ट आई मीन आई एम नॉट एबल टू गेट इवन लाइक सिर्फ एक या दो ही सवाल बन रहे 10 में से. तो इस गैप को कैसे कवर करना है? और मॉक्स आई हैवंट स्टार्टेड, I have just attended one and I am able to solve only 2 to 3 questions in mocks also. So ये जो gap है, I don't know how to cover. People say that mocks attend करो जितना, but I feel that वो gap से cover नहीं हो पाएगा mocks. I mean, I am feeling that. So I don't know how to cover this gap. No follow-up question. We've done some theory coverage. Now, when we were doing theory coverage, when you're saying basics, were you doing absolute basic सवाल और उसके अंदर भी कुछ चैलेंजिंग सवाल थे जो करने में माथा फटा था? सर बेसिक उसमें जब मैं कर रही थी बेसिक सवाल बन रहे थे, जैसे 5 डिफिकल्ट सवाल हुए उसमें से 2 या एक या 2 बनते थे और 3 नहीं बनता था डिफिकल्ट सवाल. तो हमारा जब हम अपनी क्लास कवरेज कर रहे थे या शीट सॉल्विंग कर रहे थे, उस टाइम में से मेरा 5 डिफिकल्ट में से 2 सवाल बनता था, 3 नहीं बनता. हर टॉपिक का ही.
तो फिर वो तो 3 ये जो सवाल जब गैप है, नहीं, रुक जा हाँ, भाई, जब ये 3 सवाल नहीं बना, बॉक्स की बात नहीं करें, क्लास शीट की बात करें, अब ये हम्म, जो 3 सवाल नहीं बना, इसके लिए फॉलो अप एक्शन क्या लेते थे? क्वेश्चन देखा मैंने और फिर कोई स्टेप मैं भूल गई, जैसे उसमें भी मैं 2 स्टेप कर लेती थी या फिर हम्म, कैसे अप्रोच करना है पता चल जाता था। सिर्फ बीच में कोई कुछ ओ ऐसे करना था, इसको यहाँ से लेना था, जैसे एलएचएस में लेना था, अलजेब्रा में हम्म, एलएचएस से आरएचएस अगर ले लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई मीन वो ए प्लस बी द होल स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला बन जाता था। ये वाले स्टेप्स मेरे से नहीं हो पाते हैं, मतलब वो। ओके ओके ओके, ठीक है। देख, अभी तो ये स्टेटमेंट्स आर मेकिंग ना, इससे मेरे को ये पता चल रहा है वी आर वेरी, हम बहुत अकेडमिक वे में पढ़ाई करते हैं क्या? अच्छे से नोट्स बनाते हैं अलग अलग कलर के पेन यूज करके? नहीं सर, ऐसे नहीं है, उतना लेकिन उतना पढ़ाकू नहीं है ना, उतने पढ़ाकू नहीं है ना, तो मतलब सी हाँ। मोर फंक्शनली व्हाट शुड हैपन इज algebra or geometry or numbers or arithmetic or any topic for that matter, हम्म, there is one academic way of solving it and there is also one interesting way of solving it. कुछ एक बढ़िया सा तरीका कि भाई ये ऐसे ही फटाक से पता चल जाएगा, इसमें फैक्टर वाला काम देख लो। हैव वी एवर सॉल्व्ड क्वेश्चंस इन विच, और व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, लेट्स से टीएसडी का, अच्छा टीएसडी अरिथमेटिक पढ़ लिया हमने अब तक? इतना मतलब पूरा अच्छे से नहीं, अलजेब्रा किया है। अच्छा, अ, अलजेब्रा में हम बोल रहे हैं लेट्स से मैक्सिमा मिनिमा, सर नहीं, मैक्स मॉड्यूलस के पहले का किया है, मॉड्यूलस सब पूछिए। हमने अलजेब्रा किया है, उसमें भी हमने अभी पूरा नहीं किया है। अभी 3 टॉपिक बाकी है सर। तो फिर भाई दिस इज टू अर्ली टू बी लुकिंग एट मॉक क्वेश्चंस, क्योंकि मॉक के क्वेश्चंस में एक और ब्यूटीफुल चीज रहती है। यूजुअली क्वेश्चंस इन मॉक्स एंड एक्चुअल कैट, while they appear to be from a particular topic, they also draw a lot of input from other areas. तो फिर अभी ना ये वाला काम जो आप कर रहे हैं कि हम मॉक जाके देखना चालू कर रहे हैं और हमने 10 सवाल देखे, उसमें सबसे 2 ही हुए, भाई 10 में से 2 हो गए ना, दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी हम्बल फ्लेक्स, कि भाई मेरे से 10 से 2 तो अभी हो जा रहे हैं, जब तक अभी तक हमने एक अलजेब्रा पूरा टॉपिक नहीं खत्म किया, तब भी 10 में से 2 हो जा रहे हैं, बहुत हेवी है। मॉक्स अभी मत लेना जब तक एटलीस्ट 3 टॉपिक्स आउट ऑफ 5 इन क्वांट, मॉडर्न मैथ्स, नंबर्स, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, इन 5 में से जब तक 3 ना हो जाए तब तक मत लेना बॉक्स, क्योंकि फिर व्हाट वुड हैपन इज इमोशनल इंबैलेंस होगा, नंबर खराब आते हैं, जिंदगी में लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया, एंड देन वी आर ऑल्सो फार मोर फॉरगिविंग ऑफ आवर एरर्स की यार अभी तो मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ है ना, इसीलिए मेरे से मिस हो गया, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। हम्म, बोथ दोज हम्म, आउटकम्स आर वेरी वेरी bad, and you're ending up ruining a mock that could have potentially taught you something. This हम्म, 25-30 mocks is an ideal state. Some people will only take 10 mocks, some people will only take 15 mocks. 25-30 mocks is an ideal state, but then for that ideal state, you should have latest started your theory coverage by the month of January. अगर हमने जनवरी के बाद से चालू किया, of course our timeline will be a little altered. We are not here to be saddened कि भाई हम ideal number of mocks तक नहीं पहुंच रहे, ये है कि भाई हम जितने भी मॉक्स देंगे उसको अच्छे से देंगे, उसका अच्छे से लर्निंग लेंगे, ये नहीं कि बस हम मॉक्स का नंबर बढ़ा रहे। इट्स एज गुड एज, वो नहीं रहता था कॉलेज वालों ने जब अटेंडेंस का रूल बना दिया, आई डोंट, तुम्हारी जनरेशन तक तो हम्म, रूल बना ही हुआ था, हमारे टाइम में फर्स्ट ईयर में, मेरे कॉलेज के टाइम में फर्स्ट ईयर में कोई अटेंडेंस का रूल नहीं था, सेकेंड ईयर में 75% अटेंडेंस कंपल्सरी कर दी थी, विद द एक्सपेक्टेशन दैट पीपल आर गोइंग टू बी मोर पार्टिसिपेटिव इन क्लास। लोग आते थे क्लास में डेढ़ बैठे रहते थे, जो हॉस्टल में हम लोग सो रहे थे हम लोग क्लास में आके सो रहे। तो if you force something, then it is never going to give you some, as in it is never going to give you positive returns. On the other hand, we had certain teachers जिनकी क्लास में एक्चुअल अच्छा डिस्कशन होता था, सब कुछ बातें बातें करते थे, उसमें इवन व्हेन देयर वाज नो रूल द अटेंडेंस वाज हायर देन 80%, क्योंकि बच्चों को मजा आता था, क्लास में सारे पहुंच जाते थे, जिस क्लास में हम्म, फोर्स से बुला रहे वहां पे रोके ही रहता था। सिमिलरली अगर आप बस मॉक का एक सर्टेन नंबर का थ्रेशोल्ड रीच करना चाहते हैं, दैट इज नॉट इवन मॉक टेकिंग एट ऑल, उसको लाइट लो, फर्स्ट कवर योर एज इन फाउंडेशन बनाओ, फिर बिल्डिंग बनाना चालू करो। दिस इज अ ह्यूज कंसर्न नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर अक्रॉस द बोर्ड, अ लॉट ऑफ पीपल। हम्म, ये मॉक्स मॉक्स का जो रैंडम ज्ञान है ना, मॉक्स दो मॉक्स दो मॉक्स दो, देख ऑब्जर्वेशन बायस का कॉन्सेप्ट अगर जानते हो, there are certain people who prepare for CAT twice, thrice, were insanely intelligent from before.
उनने जून के महीने से मॉक देना चालू किया और अक्टूबर नवंबर तक जाके मॉक देते रहे, और फिर कैट दिया और खूब सारी परसेंटाइल आ गई। अब ये इनसाइड आईएम और शिक्षा और वट एवर अदर वेबसाइट्स, उनने माइक पकड़ा दिया इनके सामने, तो ये लोग भी कूल बनने के लिए बोलते हैं भाई हमने ना सिर्फ मॉक से पढ़ाएंगे, मैं तो बस इतना मॉक देंगे। फिर कॉन्टेक्स्ट देखना चालू करो। भाई तूने पिछले साल कैट की कोचिंग ली थी, उसको मस्त इग्नोर मार दिया तुमने। तुमने पिछले साल भी 25 मॉक लिए थे, उसको मस्त इग्नोर मार दिया तुमने। नाउ somebody who is not contextualizing this information is looking at, अच्छा इसने 25 मॉक दिए थे, बस इसने क्लास नहीं अटेंड करी, उसके बाद भी इसके नंबर आ गए थे, दिस इज द वे टू गेट मार्क्स, दिस इज नॉट द वे टू गेट मार्क्स। पहले थ्योरी कवरेज करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट स्किप ओवर द फर्स्ट स्टेप। यू कैन नॉट बी कि भाई हम नेट में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम सीधा मैच ही खेल के आएंगे और उसमें ही हम 100 बना देंगे। नहीं हो रहा। पहले पहले मेक श्योर योर बेसिक्स, योर फंडामेंटल, योर थ्योरी कवरेज इज डन, उसके बाद टेस्ट टेकिंग पे जाना। The earlier you get to test taking, of course it would be more beneficial, but then you cannot skip over that step. वो समझ, पहले शादी होगी, फिर बेबी होगा, फिर बेबी को स्कूल में एडमिशन कराएंगे। मेरी शादी नहीं हुई लेकिन अभी कम टेंशन नहीं लगा कि मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कहाँ होगा, दैट इज गोइंग अ स्टेप टू फार। उतनी आगे नहीं बढ़ सकते अभी। डोंट टेक मॉक्स राइट नाउ, अभी पहले थ्योरी कवरेज खत्म करेंगे। ठीक है। एडिशनली द पोटेंशियल प्रॉब्लम फॉर योर चैलेंज वुड बी these mocks and actual CAT exam questions use a lot of input from other topics as well. You cannot possibly be expecting कि बस अभी तक हमने अलजेब्रा वो भी पार्शियल किया है और उससे मेरे खूब सारे सवाल हो गए। दैट इज an unrealistic expectation था। थ्योरी कवरेज शुड बी द प्रायोरिटी। ठीक है सर, whoever is like weak in quants, आप क्या सजेस्ट करते हैं? Like, is there a common mistake that they make from people who are good in maths, or आप क्या सजेस्ट करते हो? Like, what is क्वांट, the way to go about? अच्छा सी, the biggest challenge when it comes to people who are weak in quant is believing that there is something very very unique that is hidden from me that is making me weak in quant. Absolutely not. सीधी बात है, मेरे को गिटार बजाना आता है, तेरे को गिटार बजाना नहीं आता है। क्यों मेरे को गिटार बजाना आता होगा? क्योंकि आपने उसको सीखा होगा, हमने सीखा टाइम होगा, दिया हमने होगा। बहुत प्रैक्टिस किया होगा। कोई क्वांट में अच्छा क्यों होता है, क्वांट में अच्छा क्यों नहीं होता है? बचपन में मैथ्स जब हम लोग करते थे, सम पीपल गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रनिंग नंबर्स इन देयर हेड। उनको पैटर्न्स दिखते होंगे, उनके नंबर फिटिंग जब कर रहे होते होंगे क्वेश्चन में अच्छा रहा होगा, क्योंकि उन्होंने बचपन में एक गेम बहुत खेला है। हमने उतना गेम नहीं खेला है। हाउ डू वी रीच दैट लेवल? हम भी वो बहुत सारा गेम अभी खेलना चालू कर देते हैं। The only way to get better at a skill is by repeated practice. There is no secret sauce कि ऐसा कर देंगे तो चल जाएगा। Of course, at different levels of preparation, and it is not weak in quant or smart in quant. Let's say for somebody who is weak at quant, you have to, from the level that you are at, इससे आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? अभी जैसे आपने मॉड्यूलस पढ़ा, मॉड्यूलस इज द लास्ट थिंग दैट यू स्टडीड। मॉड्यूलस ही नहीं आपका दिमाग हिला गया, ये क्या चीज थी? इसके अंदर ऐसे ग्राफ ग्रुप बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का अलग अलग कहानी रहता है। फॉर समबडी हु इज वीक इन क्वांट, इवन दिस वुड बी अ सरप्राइजिंग आइडिया, ये क्या पकड़ा दिया इसके अंदर। और लेट्स से जब हम पॉलिनोमियल्स का कर रहे होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ रूट्स का एक एक्सप्रेशन बना दिया, ये सब कहां से आया, कैसे है? पहली बार में यू डोंट ग्रास्प इट एज मच, क्योंकि राइटिंग टर्म्स और राइटिंग algebraic terms is not a very simple way of working. क्यों लोग अरिथमेटिक की तरफ ग्रेविटेट करते हैं? दैट इज मोर रोजमर्रा की जिंदगी। वो दुकान गया, उसने सामान खरीदा, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ये समझ में आता है। अलजेब्रा के अंदर टॉकिंग ऑफ लेट्स से इस फंक्शन के मॉड्यूलस का सिर्फ एक ही यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करता है। दीज आर नॉट कॉमन टर्म्स, बट देन you get better at it by repeated practice. There is no other way. Don't Now, within practice, you have to ensure the level that you're at, the kind of questions that you're tackling, it is always a level above what you're at. एकदम कंफर्ट रेंज में भी नहीं रहना है और ऐसा भी नहीं करना है कि सीधे हाई लेवल पे चले जाओ, क्योंकि फिर बैक टू इमोशनल अपहीवल, वी बिकम सैडेंड, वी बिकम एक्सट्रीमली डिजेक्टेड, और फिर लगता है ये मेरे रेंज के बाहर रहेगा। ऐसे होने चाहिए। इन एन आइडियल वर्ल्ड, इफ समहाउ a question bank could be generated according to everybody's individual capacities, I would have 5 questions easy, 10 questions moderate, and 5 questions difficult. Now, the target for the candidate should be 15 सवाल तो हम पक्के से निकाल लें, बाकी के 5 डिफिकल्ट सवालों में अगर हम नहीं भी निकाले तो उससे हम कुछ सीख लें। But then,
having some material or having some collection of questions that precisely fulfill that criteria is very impossible to do. The best next recourse is जो भी सवाल सामने आता है उठा के करते जाते हैं. ओके सर. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. हाँ. Yes, निशांत. है सर. सर मेरा ना कैट 23 में एक मेजर मैसअप ये हुआ था कि जैसे कि मॉक्स में सही जा रहे थे, सब कुछ सही जा रहा था और मैं गॉज नहीं कर पाया डिफिकल्टी लेवल विद इन पेपर. तो मैं रश कर गया पेपर में. उस वजह से जहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन सही कर सकता था बनाया भी था और कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो गए, 7 क्वेश्चन सही हुए. तो जैसे कि अभी क्या होता है, जैसे कि अभी कॉन्शियस एफर्ट डाल के हल्का मॉक्स में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब इवन इफ 2-3 क्वेश्चंस कम होते हैं तो मैं वापस चेक करता हूँ कि हाँ मैंने सही आंसर मार्क किया है ना, क्योंकि कैट में ये चीज हुआ था और 2 मिस्टेक्स हो गए थे नेगेटिव और एक टीटा. तो अभी वो करता हूँ बट उससे थोड़ी स्पीड ज्यादा स्लो हो गई है. मतलब जहाँ मैं 15-16 अटेम्प्ट करता था अभी मैं 11-12 अर्ली अटेम्प्ट कर पाता हूँ. सवाल तो क्या? उसको मतलब सिली मिस्टेक्स को कैसे मतलब ऑटोमेट थोड़ा करके उसको, मतलब कोई एक टेक्निक है जिसको मैं प्रैक्टिस करके थोड़ा एलिमिनेट कर सकूं? पहले हिमालय पे जाओ, वहां पे जाके ध्यान लगाओ. क्या बकवास है भाई, सिली मिस्टेक तो सिली मिस्टेक होती है. इफ देयर वाज अ वे टू अवॉइड सिली मिस्टेक देयर वुडंट बी सिली मिस्टेक्स. नो, सिली मिस्टेक का मतलब यही है. देख, सिली मिस्टेक, अच्छा, इन अ मॉक एक टेस्टिंग करना, जब हम 2 घंटे का मॉक देते हैं तब ज्यादा सिली मिस्टेक होती है कि हम सिर्फ क्वांट का सेक्शनल देते हैं तब ज्यादा सिली मिस्टेक होती है? यूजुअली डेटा वुड सजेस्ट जब हम 2 घंटे का मॉक देते हैं तब क्वांट में ज्यादा सिली मिस्टेक होती है. इट इज ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट लोगों को ज्यादा देर तक बैठ के ध्यान लगाने की आदत नहीं रहती है. तो सिटिंग थ्रू फॉर 2 hours, बाय द टाइम द सेकंड आवर रोल्स अराउंड और क्वांट का आखिरी पोर्शन चल रहा होता है, उस टाइम पे लोगों का मन अंदर से होने लग जाता है, बंद करो, बहुत हो गया, मेरे को घर जाना है, इतना नहीं ज्यादा ध्यान लगा सकते भाई, इतनी पढ़ाई कौन करेगा. All of that starts running in their head, and at that time the likelihood of making silly errors is higher. So in order to overcome this is basically a indication of attention span अपना थोड़ा compromised हो रहा है. The best way to overcome this is जब भी आप मॉक देते हैं, मॉक दिया, most likely I don't know what sources you're using for mock, अगर हो सके if possible right after the मॉक देने के 10 मिनट का ब्रेक लो, उसके तुरंत बाद बैठ के उसके एनालिसिस करो. एनालिसिस मतलब क्वांट DILR सेक्शन की तो उसी दिन. दैट एनालिसिस शुड टेक यू अराउंड 4 to 5 hours extra. Get accustomed to sitting down for stretches of 7 hours, 8 hours एक बार में. What that would do is, when you are accustomed to sitting down for 7 hours, 8 hours in one go, 2 घंटे के अंदर fatigue would not be a factor that leads you to make errors in the quant section. Additionally, what you are also talking of is पिछले साल का, मतलब एक बार दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है वाला कहानी हम कर रहे हैं. पिछले साल का मेरा ये वाला एरर हो गया था तो इस बार हम ऐसा कर रहे हैं. While you should anyway be careful when you're solving stuff, you should anyway be careful. But understand, not every paper is identical. This in our cat industry, we have this wonderful lacuna of we are always chasing the paper. पिछले साल ऐसा ऐसा आया था तो इस साल ऐसा ऐसा हम लोग तैयारी करेंगे. पिछले साल ऐसा ऐसा हुआ था, हम ऐसा ऐसा करेंगे. 2018 के पेपर में, शायद कैट 2018 के पेपर में क्वांट अल्ट्रा फाड़ आया था. अल्ट्रा फाड़ मतलब 102 मार्क्स के क्वांट का सेक्शन था. उसके अंदर हमें याद है हमने जब हमें 50 तो ठीक है, हम अपना याद रखते हैं भाई, मेरे को उतना सेक्शनल शिक्षक याद नहीं. मेरे को याद है मेरा कुछ 81-82 था. यूजुअली you needed around 96 plus in order to get to 99.9899 वाली दुनिया. मेरा 81 कुछ था, 99.99 बन रहा था उस साल. बहुत फाड़ पेपर, बहुत ही ज्यादा. अगले साल जो मॉक के अंदर लोगों ने खून खराबा मचा रखा था भाई, क्वांट सेक्शन में किसी के 20 आ जाते थे, 30 आ जाते थे, 102 में तो लोग आग लगा देते. 2019 का क्वांट एकदम ही चिंदी आया था, अल्ट्रा चिंदी आया था. फिर उसके अगले साल में चिंदी क्वांट देना चालू कर दिया. बेसिकली अंडरस्टैंड, लास्ट ईयर्स कैट पेपर इज नो इंडिकेशन ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द नेक्स्ट ईयर. बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू ट्रीट एवरी पेपर सेपरेटली. आई एम नॉट सेइंग कि अगले साल का पेपर आसान आएगा. आई एम नॉट सेइंग अगले साल का पेपर डिफिकल्ट आएगा. आई एम सेइंग when you're looking at a question,
लेट्स से क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर ना 180 का है, लेकिन अब मेरे सामने जो बॉल आएगी, बॉल तो वही खेल सकता है ना जो मेरे सामने आ रही है। डू नॉट थिंक ऑफ कि भाई मेरा पहले एरर हो गया था, मेरा बाद में एरर हो रहा है नहीं हो रहा है, पिछले साल हमने ऐसा कर दिया था। सामने अगर सवाल है, हमने सॉल्व कर दिया, आई शुड बी केयरफुल इन नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। इफ यू गेट टू अ पॉइंट, इफ द सेक्शन सीम्स लाइक यू कैन अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस इन इट, attempt 20 questions in it. If the section seems like I can attempt 10 questions in it, attempt 10 questions in it. ये प्री कंसीव्ड आइडिया लेके जो लोग जाते हैं ना कि भाई मेरे को 17-18 सवाल करने हैं या मेरे को 15-12 सवाल करने हैं, इस साल ऑन एन एवरेज, पिछले साल हमारे मॉक्स मॉक्स का लेवल जो था और इस साल हमारे मॉक्स का लेवल जो है, देयर इज गोइंग टू बी अ ड्रास्टिक डिफरेंस अगेन, बिकॉज आवर इंडस्ट्री इज ऑलवेज चेजिंग ईयर आफ्टर ईयर। पिछले साल क्वांट टफ आई है, इसलिए इस साल कैट के मॉक्स में ये क्वांट टफ रखेंगे। इस साल इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू रीच द लेवल्स दैट यू हैड लास्ट ईयर का भी तुम्हारे पास अगर मॉक्स वॉक्स है, खोल के देखना, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल देखना। इस बार देर आर लेंथियर क्वेश्चंस, इस बार देर आर मोर, क्या बताए, लेयर्ड क्वेश्चंस। पिछली बार देयर वर लॉट्स ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस, देयर वर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो ना अंडर 1 मिनट में हो जाते थे। इस बार द प्रोपोर्शन ऑफ सच क्वेश्चंस इज मच फ्यूअर, सो ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्ट दिस ईयर वुड बी लोअर, बट देन अगेन व्हेन यू लुक एट अ डेटा पॉइंट विदाउट कॉन्टेक्स्ट, 18 से 10 हो गया, 18 से 12 हो गया, जिंदगी में तबाही है। बट क्वेश्चन का लेवल भी बदल गया। पिछले साल वो कैट 22 के बेसिस पे दे रहे थे जब सवाल आसान आए थे, इस साल वो कैट 23 के बेसिस पे दे रहे हैं जिसमें सवाल टफ आए थे। तो हाँ, बदलाव है। योर टारगेट शुड नॉट बी कि मेरे को 18 क्वेश्चंस इन क्वांट पहुंचना है। योर टारगेट शुड बी आफ्टर द टेस्ट, वर देयर एनी लो हैंगिंग फ्रूट्स दैट यू मिस्ड आउट ऑन, वर देयर एनी क्वेश्चंस दैट यू कुड हैव सॉल्व्ड इन द टेस्ट but at that time you made a poor decision about it, or were there any questions that should not have been picked up in the test but you spent 4 minutes 5 minutes in it? As long as your individual decision making per question is fine, फिर ओवरऑल कितने क्वेश्चंस हुए, कितने सवाल सही हुए, कितने सवाल गलत हुए, ऑल ऑफ दोज आर इममटेरियल डेटा पॉइंट्स। यही समझ। आईपीएल में जब ये लोग खेल रहे थे भाई लोग, तब 200 रन भी सेफ स्कोर नहीं हो रहा था, अभी 120 सेफ स्कोर हो गया। अभी 120 सेफ स्कोर हो गया। कंडीशंस बदल ही गई है, तो अब ये थोड़ी बोल सकता है यार एवरेज स्कोर तो अभी रिसेंट में T20 का 200 चल रहा था, हमारी टीम हारी नहीं रही है, बहुत खराब खेल रही। नहीं, मुद्दा जब पिच कंडीशंस बदली, जब सिचुएशन बदली, जब टीम कॉम्पोजिशन बदली है, तब मैच जीतने वाली हालत होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज मैच जीत रहे सब कुछ बढ़िया। वहां 200 कितना 260 बना के भी एक टीम हारी थी ना कुछ। हाँ, कोई एक भयंकर सा मैच था जिसमें चेजिंग टीम ने कुछ ज्यादा ही रन मार दिए थे। और अभी 120 साउथ अफ्रीका ने पूरे लीग स्टेज में 120 रन नहीं बनाए, तीनों मैच जीती है, 120 रन नहीं बनाए, बढ़िया चल रहा उनका। सो आई एम एब्सोल्युटली नॉट ए क्रिकेट फैन, बट आई कीप ट्रैक ऑफ क्रिकेट इवेंट्स, क्योंकि ये एग्जांपल देने में काम आता है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या हो रहा है, बट ये समझ, बिकॉज दी कंडीशंस आर डिफरेंट, यू कैन नॉट बी कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। पिछले साल के मॉक्स और इस साल के मॉक्स में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है क्वांट का। सो हैविंग 18 questions का attempt rate, again don't be biased by what happened in the last year's paper। अभी जो सामने पेपर आ रहा है इसके अंदर आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं in your post test analysis, all you should be focusing on, was this a question I should have picked up, was this a question I should not have picked up, that is more important than मेरा ओवरऑल 10 सवाल हुआ या मेरा 7 सवाल हुआ। देयर कुड, निशान का ही नहीं बाकी को भी देखना, लेट्स से उन्होंने ये टेस्ट वाले कट ऑफ्स भी देते हैं, 85 परसेंटाइल पे ये होगा और 97 परसेंटाइल पे ये होगा। दोस डेटा पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली रैंडम, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आईएमएस के मॉक में यू विल नॉट फाइंड अ पर्सन हु स्कोर्स लोअर देन 47ish परसेंटाइल, दैट इज द लोएस्ट परसेंटाइल। लेकिन उनका अपना अलग ही कहानी चल रहा था और डेटा मैनेजमेंट अलग करते। बट ये समझ, in a mock, if you think you're only able to solve 7 questions and you got those 7 questions right, or test के बाद that those decisions turned out to be true, and yet you saw everyone else doing 15 questions correct and the cutoff is, let's say, 50 in that test, it is an absolutely wonderful test that you have। तेरा स्कोर मैच कर रहा है कि नहीं, तेरा कट ऑफ क्रॉस कर रहा है कि नहीं, these are absolutely randomized and क्या बताए, very non-scientific numbers। The only variable in your control is your performance, your decision making, उस पर नियंत्रण रखो, चल जाएगा। Which is also translating into, let's say, Nishant, because he is 99 and everything, सारे नंबर लाए हुए भाई ने, इसने अगर 45 मार दिया टेस्ट पे,
एंड कंपेयर टू मी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और हमने बहुत खराब, मतलब हम पहली बार कर रहे हैं, उसने 50 मारा है क्वांट के सेक्शन में और हमने 23 मारा है क्वांट के सेक्शन में। यहाँ पे कंपैरिजन का दुख है कि यार उसके इतने आगे मेरे इतने क्यों नहीं है, मेरा तो कम रह गया। भाई मेरा 23 क्या ठीक 23 है? 23 है तो ऑफकोर्स कुछ गलत भी हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो वो गलत क्यों हुआ है? वॉज इट अ कॉन्सेप्ट इशू, वॉज इट अ केयरलेस एरर? उसको ओवरकम करना है। What Nishant is getting is absolutely beyond my control. I should not be thinking or worrying about it. I know it is easier said than done because we are human beings. We are always motivated and driven by दूसरे का इतना है तो मेरा क्यों नहीं है? But the instinct, you become civilized when you realize your instinct is X, but the action you should take is Y. If you follow through an action Y, everything will be in place. And I think that will be all. निशांत हो गया ना सवाल का जवाब? होपफुली हाँ 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 ठीक है। हिमाजा, डू वी हैव समथिंग मोर टू आस्क? की हैंड रेस है कि वो पिछले का ही है? हाँ, यस सर, यस सर। सर आप कह रहे थे कि आप कलर पेन से लिखते हो क्या? ऐसे आप बोल रहे थे ना कि मतलब स्कॉलरली हाँ ऐसे। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने नोट्स बनाते हुए कुछ अच्छे बच्चे हाँ होते हैं हाँ जो एक हाँ रेड पेन से हेडिंग लिखते हैं और फिर ब्लू पेन से नोट्स बनाते हैं और फिर पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं, फिर अलग अलग काम करते हैं। वैसे बच्चे क्या? नॉट एग्जैक्टली, बट नोट्स बनाती हूँ। मेरे को क्या लगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें नॉलेज, जो एप्लीकेशन है जो मैं थियोरी पढ़ती हूँ उसमें थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं अप्लाई कर नहीं पाती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहन अभी द लास्ट कॉन्वर्जेशन वाज, अभी हमने अलजेब्रा का पार्शियल कवरेज किया है ना। हाँ, तो वही प्रॉब्लम, तो भाई मतलब सबने थियोरी। वो प्रॉब्लम नहीं है, हम ये बोल रहे। द प्रॉब्लम इज यू वरिंग अबाउट एप्लीकेशन में प्रॉब्लम। अभी थ्योरी पे ध्यान दो। अभी ठीक है। वी आर थिंकिंग अबाउट फार टू हेड इन द फ्यूचर। अभी पहले थ्योरी पे ध्यान दो। ये रहता ना आरसी, मतलब बीएआरसी के सेक्शन से लोग आरसी पढ़ते हो, सेंट्रल थीम देख रहे होते हैं, टोन देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या 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 देख रहे होते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड हाँ। बीएआरसी कवरेज इन द इंडस्ट्री। आपने भी अगर क्लास वास करी हो तो यही सिखाते हैं। हाँ हाँ हम ये सब नहीं करते और मेरा बीआरसी सेक्शन क्वांट से और डीआईएलआर से ज्यादा अच्छा जाता है। हम सीधा मान के चलते हैं, मेरा ब्रेन बहुत लिमिटेड है। माई ब्रेन फंक्शंस, मतलब बहुत लिमिटेड कैपेसिटी, इतनी सारी बातें मेरे को याद रहती हैं। तो हम सीधा सीधा जब किसी का टेक्स्ट आता है, लेट्स से यू टॉक टू पीपल ओवर टेक्स्ट, तब तुम उसका टोन और थीम और सब कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि तुम रीड करते हो, समझते हो, एंड दीज थिंग्स नेचुरली कम टू यू, बहुत ही नेचुरली। इंस्टिंक्टिवली आते हैं। लेकिन जब आरसी पढ़ रहे होते, पीपल हैव दिस वेरी डायरेक्टेड आउटकम ड्रिवन। ये आ रहा है कि नहीं, ये टोन ये है, ऑथर सपोर्ट कर रहा है कि क्यों पढ़ना, जो बातें लिखी है वो समझो, क्वेश्चन उसी से निकलेंगे। if this basically what is happening is in DILR, in BARC, even in quant, there are this test is a test of IQ, logic का test है, because logic is difficult to explain and expand upon. People give you frameworks and then it seems like, oh ये framework अगर मेरे को मिल गया ना तो इस framework से सब कुछ हो जाएगा। No framework ever works in every situation. I'm sure some of us know the who, what, when, how, where, why framework for BARC, for RC reading. कोई जानता है who, what, when, why, how वाला framework for every passage? ऐसा ऐसा करना चाहिए। कोई भी जानता है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं जानता। ठीक है, नहीं। जैसे वो जीजो सर कराते ना उसका बीआरसी के अंदर, तो हाँ it is very popular, it is very nice, but then if you try to apply that framework in a lot of RCs, it would not work because not every RC is designed for that framework at all. So don't try to force fit into a framework। जो सामने आ रहा है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, उसी हिसाब से काम करेंगे। अभी हमारे सामने काम आ रहा है थ्योरी कवरेज का, भी हम थ्योरी कवरेज करेंगे। वंस द थ्योरी कवरेज इज डन, एक बार जब ये काम खत्म हो गया, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस जाके करेंगे विथ नॉलेज ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, तब देखना योर रेट ऑफ सॉल्विंग, योर रेट ऑफ बीइंग एबल टू अप्लाई इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, इट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर। राइट नाउ वी आर वरिंग अबाउट थिंग्स दैट आर टू फार अहेड इन फ्यूचर। उतनी चिंता करो मत, you're unnecessarily being harsh on yourself। जो and अगर ऐसा है ना, if you thrive under if you thrive when you put unnecessary pressure on yourself, go ahead do that। if you don't thrive under that situation तो मत करो। ओके सर। सर बेसिक बोले बोले
आपका कोई कोर्स है क्या अभी 24 मेरा के कोर्स लिए? मेरा कोर्स बंद हो गया 24 के लिए। मेरा कोर्स 31 मई को बंद हो जाता है, क्योंकि So, मतलब I have a very strong aversion to crash courses and final batches और ये batches वो batches. After 31st May I cannot realistically help anyone who is paying me money. हम ऐसे बैठ के ज्ञान वाली बातें कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ा सकते, थ्योरी कवरेज नहीं खत्म करा सकते तुम्हारा, हम तुम्हें मॉक टेस्ट की बातें नहीं खिला सकते. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी ऑफ पीपल्स फोमो, हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देते 31st में के बाद मेरा कोई कोर्स नहीं चलता. And this सर is एक not मंथ this is not just this year. It is happening since the inception of this institute. सर लाइक तो एक मंथ में कवर नहीं हो सकता ऐसे जो बिल्कुल अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं. जो हम पढ़ाते हो तो बिल्कुल कवर नहीं हो सकता. देखिए अंडरस्टैंड, आप जो बोल रहे हैं ना, आपने जो बेसिक करा हम्म, है टीएचडी में, आपने एक टीएचडी का टॉपिक अगर आप करेंगे तो उसके अंदर कितने सवाल करेंगे? सर अराउंड 40. 40. हमने टीएचडी के क्लास के अंदर कुछ 25-30 सवाल कराए हैं, और उसके बाद हमने शीट के अंदर 200 सवाल कराए हैं, और उसके बाद हमने वर्कशॉप के अंदर खूब सारे सवाल, मतलब वर्कशॉप के अंदर अराउंड 80-85 सवाल कराए सिर्फ टीएसडी के ऊपर. द अमाउंट ऑफ कंटेंट एंड वर्क दैट आई गिव आउट इज सिग्निफिकेंटली लार्ज. तो अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे भी, इट वुड टर्न इनटू क्या बताए, ये वाली हालत की भाई वो इतना सारा करने को यू वुड प्रॉब्ली end up in a situation where you give up, or I would end up, मतलब हालत ये रहेगी, it would not be a fair deal wherein I'm taking compensation but I'm not providing service in return. तो ऐसा काम ही नहीं करना. मतलब मेरे को when I started my institute, my primary thing was एक ये क्रैश कोर्सेज के नाम पे जो भयंकर स्कैम होता है वो कभी नहीं करेंगे, एंड we will never take on more and more kids without. इस साल in all honesty, the number of kids that I have enrolled is lower than what I had last year. Or even, in fact, this is the 4th year of operation. Second year में जितने बच्चे थे उतने बच्चे भी नहीं इस साल. But still, the policy will never change, क्योंकि policy had an argument behind it. Policy had a reasoning behind it. आप लोग अपना पढ़ाई करिए, यही टेंशन ना लीजिए, अपना पढ़ाई करिए, अपना जो कवरेज हो सकता है, जितना हो सकता है उसको मैक्सिमाइज करिए. स्टफ दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, नेवर एवर वरी अबाउट इट. भाई लोग अब जाओ, मेरा 10 बजे से मेरे कोर्स वाले बच्चों के साथ क्लास है, मेरे को डिनर नहीं करना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. इस सेशन की रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं रहती. इट इज विद इनसाइड IIM folks. So if you want a recording of this, please reach out to them. Most likely they will not give you a recording of this because हम इंस्टीट्यूट सर लोगों के नाम हम ले लेते हैं, तो वो तुम्हें देंगे नहीं. जितना सुन लिया उससे काम चला लेना. चलो सर और अरुण शर्मा के बारे में, अरुण शर्मा सॉल्व करना ठीक होगा क्या? भाई सब मटेरियल बढ़िया है. एवरी मटेरियल इज नाइस. पिक अप एनी मटेरियल, जस्ट सॉल्व. डोंट. अच्छा, अरुण शर्मा की बुक या सर्वेश कुमार वर्मा की बुक या निशित के सिन्हा की बुक या एक कौन है, एक और कोई नया मार्केट में आया वाइली पब्लिकेशन का, आशु कुमार को, आशु जैन की बुक, किसी की भी बुक उठा लो, बस बुक उठाओ, सॉल्व करना चालू कर दो. इफ यू ऑल्सो कीप दीज बुक्स साइड बाय साइड, you'll see 70% of the questions overlap. It's not like बहुत significant question में डिफरेंस हो रहा है. बस सवाल उठाओ, सवाल करो, बस यही है. इफ यू, मतलब ये समझना, अगर अरुण, if something was undisputed best, that would be the only thing that would survive. The fact that competitors exist, it means some need is being met by the competitors also. किसी रेस्पेक्ट में भी अच्छे होंगे, किसी रेस्पेक्ट में भी अच्छे होंगे. तो every book is great, every book has good points. For you, the target is skill building. कोई भी एक बुक उठाओ, सॉल्व करना चालू कर दो. ओके सर. एक्चुअली दे सेड लाइक 2023 के पेपर के बाद रिडंडेंट हो गया है अरुण शर्मा. इट इज नॉट एनी यूजफुल. ऐसे बोल. They being my people who are preparing. Crowd. The average person in the, acha, we've lived long enough to realize the average person in the crowd is an idiot. The average IQ, if you're in a crowd, the average IQ of that crowd would be below par, would be below the level of the person that you want to talk to. High crowd wisdom is usually based on so many factors. ये समझ, हर साल के कैट के पेपर के बाद लोग यही रोते, पेपर बहुत टफ आया. पिछले साल का क्वांट का सेक्शन was genuinely tough.
लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस साल टफ नहीं आता उस साल लोग रोते नहीं है। अरुण शर्मा की किताब को लोग ऑब्सोलीट बोल देंगे, और दूसरी कौन सी अच्छी है, सर्वेश कुमार वर्मा, ओपन द बुक्स 70% क्वेश्चंस ओवरलैप, these data points are immaterial, अरुण शर्मा की किताब खराब है। गिविंग आउट हेट इन दिस वर्ल्ड इज वेरी इजी, नो। इफ यू हैव अरुण शर्मा की किताब, यूज दैट। इफ यू हैव सर्वेश कुमार वर्मा की किताब, यूज दैट। इफ यू हैव निशित केसिना की किताब, जो भी किताब है उसे सॉल्व करना चालू कर दो। देयर इज नो ये अच्छा है वो अच्छा है। अभी ये तो अभी अरुण शर्मा की किताबों की बात है, आईएमएस का मॉक अच्छा है या सीएल का मॉक अच्छा है, ये अभी लड़ाइयां चल रही है बढ़िया। और इन मोस्ट वोकल पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप आर सेइंग सीएल अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है भाई। सीएल का डीआईएलआर इज परहैप्स द वर्स्ट आउट ऑफ द थ्री इन टाइम। सीएल एंड आईएमएस, आईएमएस का डीआईएलआर इज द बेस्ट, क्योंकि आईएमएस नए सवाल बनाता है और लॉजिकल सवाल बनाता है। सीएल के डीआईएलआर तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान के काम चला देते हैं। सीएल हैज द वर्स्ट कलेक्शन ऑफ, अच्छा, बट आई एम मेकिंग दैट जजमेंट कॉल, क्योंकि हम तीनों ऑफ सीरीज देखते हैं हर साल, उनका एवोल्यूशन देखते हैं, सब कुछ काम करते हैं। बट यहाँ पे पिछले साल नमा कैट की तैयारी करने वाले, आईएमएस खराब हो गया, सीएल अच्छा है ज्यादा। किस मर्जी से, किस बात से, क्योंकि किसी एक ने बोल दिया, पीछे पीछे भीड़ लग जाती है। एवरेज पर्सन इन द क्राउड इज एन इडियट, मस्त एकदम बात नहीं सुननी, pick up something, start doing it. It's as good as if you have to go to a gym. There is a very nice gym, but it is 6 kilometers away, and there is a decent gym 1 kilometer away. Which gym will I go to? I will go to the 1 kilometer away gym. 6 kilometer वाला नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा समय बचता है. There is a advantage here for me going to the gym. अच्छा, there is an even nicer gym. There is an even worse gym right within my home. मेरे घर के में ही equipment है. Now do I choose to do it घर पे, या now do I go to the 1 kilometer away gym? भाई मेरे को अगर एक्सरसाइज करनी है, आई विल डू दी एक्सरसाइज समवेयर। घर पे कर लेंगे, जिम चले जाएंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट एक्सरसाइज करेंगे। माई टारगेट इज टू डू एक्सरसाइज। योर इन दिस केस योर टारगेट इज टू डू मेंटल एक्सरसाइज। सवाल उठाओ, सवाल करो, जज मत करो कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा मटेरियल खराब। अभी जज होगा, परसेंटाइल प्रिडिक्शन होगा, सब कुछ होगा। चलो जनता, 20 मिनट बचे भाई, मेरा क्लास चालू होगा। बाय बाय। बाय Thank सर, you, sir. थैंक यू।